I am Dr. Nirupama Swai, Assistant Professor, Political Science, BJB Higher Secondary School. Today's topic is Nation Building in India. भारतरे राष्ट्र निर्माण बा जातीय निर्माण. Nation building is a continuous, long-term and multi-dimensional process. It starts with the development of a feeling of national unity and integrity in the subconscious mind of the citizens. It is a process which stresses on direct and active involvement of the individuals in the social, economic and political reconstruction of the country. भारतरे राष्ट्र निर्माण कहिले एहा एक निरवच्छिन्न दीर्घसूत्री एवं बहुमुखी प्रणाली. एहा जातीय अभिवृद्धि एकता और संहति पाई नागरिक मानकर सामूहिक योगदान को बुझाए. एहा एक प्रणाली जेउथिरे लोक माने सक्रिय भाव रे अंशग्रहण करती एवं एथिरे राष्ट्र निर्माण मुख्य उद्देश्य बा अभिमुख्य हेउची सामाजिक, अर्थनैतिक एवं राजनैतिक गठन. The process of nation building demands that every individual must give up his conservative, traditional and sectarian outlook in favor of a more national and modern outlook. Every individual should rise above the caste, class, religious and regional feeling to serve the nation with all sincerity and devotion. भारत हेउची एक राष्ट्र जोटी विभिन्न प्रकार विभिन्नता देखा जाए. जाति, धर्म, भाषा, धर्म, आंचलिकता एवं विभिन्न वर्गर लोक माने एठी बास करुथिबारु एही विभिन्नता मध्यरे एकता रक्षा करिबा एक वैशिष्ट्य एवं जेउठी जाति निर्माण एक भारत प्रति एक आह्वान भाव रे देखा देई थाए. एवं एही विभिन्न प्रकार हीनमान्यता को अतिक्रम करी देशर स्वार्थ, देशर सुरक्षा पाई कार्य करिबा हेउची भारत राष्ट्र निर्माणर आभिमुख्य. It is a process of uniting the people into a nation committed to subordinate all traditional loyalties to an overriding loyalty to the nation. Nation building tries to achieve qualitative development by tapping the potential of its human resources, reducing the social and economic disparity and enabling an environment where individuals can live freely and attain their best in life. जाति निर्माण हेउची एक व्यवस्था बा प्रणाली जेउठी समस्त नागरिक बा अधिवासी निजर क्षुद्र हीनमान्यता को दूर करी अतिक्रम करी निजर मातृभूमि प्रति कार्य करिवे एवं जातीय स्तर रे मानविक संबलर सदुपयोग करी सामाजिक अर्थनैतिक अभिवृद्धि हासिल पाई प्रतिबद्ध हेबे. Before going to define nation building, first of all we try to understand what do we mean by nation. The word nation has come from the Latin word natio, which means birth. Thus nation is related to blood relationship or kinship. The word state, nation and nationality are generally used as synonyms, but theoretically those are different. जाति निर्माण कौन बुझा पूर्वर आमे प्रथमे जानिबा जाति कौन. जाति होची एक शब्द जहा लैटिन शब्द नेशियो आसीछि जार अर्थ होची जन्म. तेणु जाति साधारणतः रक्त संपर्क उपरे पर्यवेसित. जदियो आमे साधारण भाव रे राष्ट्र, जाति और जातीयता को प्रतिशब्द भाव रे व्यवहार करू, किंतु तात्विक दृष्टिकोण एहार अर्थ भिन्न अटे. Then first of all we try to understand what is the difference between state and nation. राष्ट्र एवं जाति भितर कौन पार्थक्य रही. State is a political organization while nation is an emotional and psychological condition. State has four main elements: population, territory, government and sovereignty, while nation is based upon some cultural elements and emotional feelings. The state is externally oriented while the nation is internally oriented. State has legal status while nation is a psychological phenomenon. राष्ट्र एवं जाति भितर जो प्राथमिक प्रभेद गुड़िक रही. प्रथमे राष्ट्र हूँ एक राजनैतिक संगठन बा राजनैतिक संघ जोठी जाति हूँ एक भावगत बा मनस्तात्विक अवस्था. राष्ट्र चारोटी मुख्य उपादान रही: लोकसंख्या,
भौगोलिक सीमारेखा सरकार एवं सार्वभौमत्व जेतेबेले जातिर एपरि कोनोसी उपादानर आवश्यकता न थाए एवं यह समग्र भाव में सांस्कृतिक उपादान एवं आवेगिक चेतना उपरे निर्भर करे। राष्ट्र एक मनुष्यर बाहर को प्रतिफलित होइथिबा एक भावना जोठी जाति हेउची मनुष्यर आवेग सहित जेहेतु जड़ित यह होची अंतःस्वर उपरे पर्यवेसित। राष्ट्र गठन करबा पई कि एक आईनर आवश्यकता रही विशेष करके प्रत्येक राष्ट्र संविधान उपरे पर्यवेसित होता है जितेबाला जाति गठन पाई सेपरी कौन प्रकार आईनगत आवश्यकता न थाए यह होची मनस्तात्विक अवस्था उपरे निर्भर करे। देन विल कम टू डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशनलिटी। प्रोफेसर जिमन in his book Nationality and Government has clearly described the distinction between state and nationality. According to him, state is objective while nationality is subjective. State is political, nationality is psychological. State is condition in law, nationality is condition of mind. State enforces obligation while nationality is based upon spiritual position. State is inseparable from all civilized way of living while nationality is inseparable from way of feeling and love for the nation. राष्ट्र होची गोटे वस्तुभित्तिक अवस्था जेतेबेले जातीयता होची एवं भावगत व्यवस्था। राष्ट्र होची राजनैतिक, जातीयता होची मनस्तात्विक। राष्ट्र आईन उपरे पर्यवेसित, जातीयता मनुष्यर मानसिक स्थिति उपरे पर्यवेसित। राष्ट्र केते गुड़िए व्यवस्था बा आईन को कार्यकारी करबा पई कि बाध्य अटे जेतेबेले जातीयता होची संपूर्ण भाव में आध्यात्मिक चेतना उपरे पर्यवेसित। राष्ट्र निजकू लोकमानंकर सांस्कृतिक जीवन ठारू अलगा करि पारे नाही एवं मनुष्यर जीवन को सुशृंखलित करबा पई विभिन्न प्रकार आईन प्रणयन करिथाय जेतेबेले जातीयता केवल देश प्रति, जाति प्रति, मातृभूमि प्रति भल पाइबा उपरे पर्यवेसित होता है। देन विल कम टू डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड नेशनलिटी। जाति एवं जातीयता। नेशन इज ए पॉलिटिकल एंटिटी, nationality is psychological and cultural entity. Several racial and ethnic groups forms a nation, while within a nationality there is one racial or one ethnic group. Nation has affinity towards attaining a political status, while nationality has sentimental, emotional affinity towards own identity. Nation recognizes to or give recognition to nationality, while nationality taken together by taking few nationalities they form the nation. जाति और जातीयता भितर प्रभेद। जाति कहले एक राजनैतिक सत्ता बा राजनैतिक अवस्थिति। जातीयता होची एक मनस्तात्विक बा सांस्कृतिक सत्ता। गोटिए जाति भितर विभिन्न प्रकारर जातीयता गोष्ठीर लोक माने बसवास करती, किंतु गोटे व्यक्तिर गोटिए जातीयता होची तार परिचय। गोटे जाति गोटे राजनैतिक स्थिति को हासिल करबा पई कि कार्य संपादन करिथाय, जेतेबेले जातीयता गोटे व्यक्तिर भावात्मक भावना को परिप्रकाश करबा पई कि सहाय्य करे। गोटे जाति गोटे जातीयता को स्वीकृति दबा पई कि सृष्टि होता एवं जातीयता होची किछि जातीयता बा किछि व्यक्ति जो मानकर निर्दिष्ट जातीयता रहिछि सेमानकु नै कि जाति सृष्टि होता। In India, there has been different ethnic groups are staying like Indo-Aryan, Dravidian, Austro-Pacific and Sino-Tibetan, which has been reflected in the map. Then we will come to the definition of the nation building. To define nation building, there has been various definitions are there. We have taken some definitions, and according to K.W. Deutsch, nation building is a conscious and a planned out political process aimed at the establishment of some political goals like an effective government, sound economic system, national integration and cultural modernity. Therefore, according to Deutsch, nation building is a process, political process, which aims to achieve certain political goals by the state, like government should be effective, economic system should be sound,
there should be national integration and there should be cultural modernity. KW Deutsch को मतरे जाति निर्माण हेउछि चेतनाशील एवं योजनाबद्ध राजनैतिक प्रणाली रे फलप्रद सरकार, अर्थनैतिक व्यवस्था, जातीय संहति एवं सांस्कृतिक आधुनिकता इत्यादि राजनैतिक लक्ष्य प्रतिष्ठा करिबा। तेणु राष्ट्र निर्माण हेउछि राजनैतिक लक्ष्य हासिल करबा पई कि जेतेबेले गोटे जाति प्रतिष्ठा हेउछि से दिगरे कार्य समापन हेउछि राष्ट्र निर्माण बा जाति निर्माण। एवं ए जाति निर्माणर मुख्य उद्देश्य होछि गोटे सुस्थ सुसंगत सरकार प्रतिष्ठा करिबा, अर्थनैतिक व्यवस्था सुसंगठित हेबा आवश्यक, जातीय संहति रक्षा हेबा आवश्यक एवं सांस्कृतिक आधुनिकता मध्य रहिबा आवश्यक। Then according to Myron Weiner, nation building is a wide ranging process which begins after the creation of a nation state so as to make it viable, cohesive, well organized, autonomous body which is widely acceptable. According to Weiner, nation building process has to be started after the formation of the nation. That means when nation will be formed, to continue the nation as a sovereign entity, the process of nation building is essential and it is also aims to make the nation an autonomous body and a viable body and a cohesive body. Myron Weiner को मतरे जाति राष्ट्र सृष्टि परे ताहाकु जीवंत, दृढ़, सुसंगठित, स्वावलंबनशील एवं विस्तृत भावे ग्रहणयोग्य अनुष्ठान रे परिणत करने निमित्त राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया आरंभ हुए। तेणुक जितेबाला राष्ट्र सृष्टि हो सार जाति सृष्टि हो सार एवं से जातिर अभिवृद्धि को कंटिन्यूअसली निरवच्छिन्न भाव में बजाय रखापी जितेबाला राष्ट्र किसी पदक्षेप ग्रहण करे सेतेबेले राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया आरंभ होता है। Then according to S.L. Sikri, nation building involves a social revolution of the most prolonged character, the subordination of all traditional social loyalties, arrangements and the power to overriding loyalty to the motherland and to one authority, that is the state. According to S.L. Sikri, nation building is all the individuals living within the nation, they should cross all types of the narrow thinkings, traditional thinkings, spiritualism, and they should give their loyalty towards a larger whole, that is the nation, that is the state. S.L. Sikri का मतरे जाति गठन एक अत्यंत गभीर और अर्थपूर्ण सामाजिक विप्लव जहाँ फल कौन स्वाधीन राष्ट्र जनसाधारण समस्त संकीर्ण सामाजिक परंपरा और व्यवस्था तथा श्रेणीभित्तिक क्षमता केन्द्र प्रति आनुगत्य परिहार करी सेमानंकर सर्वश्रेष्ठ आनुगत्य निजर मातृभूमि और एकमात्र राष्ट्रीय कर्तृत्व को प्रदान करती। तेणुक प्रत्येक मनुष्य गोष्ठी विभिन्न प्रकार गोष्ठी रही जाति को नहीं, धर्म को नहीं, बासस्थान को नहीं एवं सही विभिन्नता को आम अतिक्रम करी जेतेबेले बृहत्तर स्वार्थ निमित्त राष्ट्र प्रति आमर आनुगत्य प्रदर्शन करवा ताहा हेउची जाति निर्माण। So, if we will sum total the definitions given by the various political scientists, we can come to the certain point that nation building implies psychological feelings to be united for progress and development of the motherland. जाति निर्माण हेउची एक मनस्तात्विक भावना जहाँ द्वारा समस्त नागरिक एकत्रित होई देशर अभिवृद्धि हासिल पाई बा मातृभूमिर प्रगति पाई कार्य संपादन करिवे। Development here not limited to materialistic but includes qualitative change in social and economic conditions. खाली वस्तुगत अभिवृद्धि नुहे आमर वस्तुगत अभिवृद्धि सहित आमर सामाजिक परिवर्तन आवश्यक, आमर अर्थनैतिक परिवर्तन आवश्यक। तेणु गोटे राष्ट्र भितर बसवास करुथिबा व्यक्ति मानकर सामाजिक अभिवृद्धि जेतले हासिल हबो, अर्थनैतिक अभिवृद्धि जेतले हासिल हबो सेतेबेले आमे सेही देश को अभिवृद्धि संपन्न देश बोली कहिबा। तेणु जाति निर्माणर उद्देश्य केवल वस्तुगत अभिवृद्धि नुहे, सामाजिक एवं राजनैतिक अभिवृद्धि। Nation building is emotional integration of different groups of the people. So within a nation there has been different groups of the people are staying. Groups can be formed on the basis of caste, on the basis of class, on the basis of the language, on the basis of sex also, on the basis of the religion also, and also region also. So while we will
cross all these limitations or all these groups and will work for the betterment of the nation, that is the nation building. And in order to achieve that, we should be emotionally integrated to each other. आमे परस्पर सहित भावगत स्तर रे ऐक्य स्थापन कले ही जाति निर्माण संभव हे पारिबो. Then we will come to the factors of the nation building. In order to build nation, some factors or some elements are very much essential, and we are going to discuss about those factors which are contributing for nation building. The first factor is the national goal. In every state, government fixes certain goals, and to achieve that makes plans and policies. Democracy, socialism, secularism, justice, liberty, equality and fraternity are the national goals of India. So, every state fixes certain goals, and in order to achieve that goals they work. And in India the goals are democracy, socialism, secularism, justice, liberty, equality and fraternity. प्रत्येक राष्ट्र रो गोटे लक्ष्य अछि जहा को आमे कहूछु जातीय लक्ष्य. सेमति भारतर जातीय लक्ष्य होछि गणतंत्र प्रतिष्ठा करिबा, समाजवाद प्रतिष्ठा करिबा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे परिणत करिबा, न्याय प्रदान करिबा, स्वतंत्रता प्रदान करिबा, समानता एवं भातृत्व भाव रक्षा करिबा एवं राष्ट्र सेई दिगरे कार्य करूछि. तनको राजनैतिक भावरे राष्ट्र जेतेबेले जातीय लक्ष्य अभिवृद्धि हासिल पाई कार्य करे ताहा एक उपादान भावरे कार्य करूछि. Besides, every nation has certain type of the national symbols, and the individuals who are living within the nation, they should pay respect towards those type of the symbols. So, national symbols may be national flag, national song, national anthem, national animal, national bird, and their identity of a nation. So, here there has been various national symbols has been reflected in the project. Then we will go to the next factor, that is the far-sighted leadership. A nation is built under the vigilant guidance of the leader. A committed, devoted and dedicated national leader is only able to build a vibrant nation. So, though in the democracy it has been mentioned that we should all participate, all people has a share in the government, but it is not practicable. So, we have to depend upon our leaders for the development of the nation, and those leaders, they should be dedicated, they should be devoted, they should be committed in order to achieve the goals of the nation. दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व. तेणुक आमे जो नेता मानक उपरे आम देशर अभिवृद्धि निर्भर करुछि सेई नेतृवृंद जदि से माने प्रतिबद्धतार सहित कार्य संपादन करिवे एवं से माने समर्पित हेबे राष्ट्रपति सरकार प्रति एवं अंगीकारबद्ध हेबे ताहाले गोटे राष्ट्र गोटे देश दृढ़ राष्ट्र दृढ़ बा प्रगतिशील देश भावरे उभा हेई पारिबो. Then the next factor is continuous people's support. Active participation of people and cooperation is essential for successful implementation of government plans. So, people's unconditional continuous support is essential for the nation building. If they will participate actively and they will be very cooperative in implementing the rules and regulations, then government plans can be successful one. तेणुक लोक मानकर निरवच्छिन्न समर्थन जदि सक्रिय भाव रे लोक माने अंशग्रहण करिवे ताहले सरकार राष्ट्र प्रणयन करुथिबा समस्त आईन सुस्थ भाव रे कार्यकारी हेई पारिबो एवं देशर लक्ष्य आभिमुख्य हासिल हेई पारिबो. The next is extensive public education. People become conscious about national goals through extensive education. With a high level of public literacy, people become free from orthodoxism and parochialism. So, education is very much essential to eradicate various social problems from the society. And for that, if the people will be literate enough, will be educated enough, then they will be conscious. They will be conscious about their rights, they will be conscious about their duties. So, through the extensive education, a nation can achieve its goals. So, it is very much essential for the nation building that there should be spread of the education. जन शिक्षा लोक मानकर शिक्षा लोक माने शिक्षित हवा निहाती आवश्यक. जदि से माने शिक्षित न हेबे ताले विभिन्न कुसंस्कार अंधविश्वास द्वारा से माने आच्छादित हेबे जहा द्वारा जाति निर्माण क्षेत्र में बाधा सृष्टि हेब. तेणु शिक्षार प्रसार निहाती आवश्यक. जेते लोक शिक्षित हेबे राष्ट्र सेते अभिवृद्धि हासिल करिब.
The next is independent mass media. Role of mass media is very significant for providing political education to the people. Through the use of alert, active and neutral information, mass media brings socialization, modernization, consciousness and development. So, mass media should be independent one, because in a democracy after election is over, between government and people there is no link, and mass media maintains the link between the government and the people. So, it is very much essential that mass media should give right information, neutral information, concrete information to the people, so that nobody will be biased, and for that reason mass media is considered as the fourth pillar of the democracy. So, independent mass media is essential for the nation building. गोटे स्वाधीन मुक्त गणमाध्यम आवश्यकता रही राष्ट्र निर्माण पाई, कहीं ना गणमाध्यम जदि मुक्त न हो, जदि यह निरपेक्ष तथ्य उपस्थापन करिब नाही, ताहले लोक माने भूल तथ्य द्वारा परिचालित हेबे, जहाँ देशर संहति एकदा एवं सरकार प्रति विपद सृष्टि करिब। तेणुक सुस्थ निरपेक्ष गणमाध्यमर आवश्यकता रही। Then economic development and social justice. Development should be inclusive. By utilizing national resources properly, social equality and social justice is established. अर्थनैतिक अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय, जदि सामाजिक न्याय न मिलिब लोक मानकु, ताहले लोक मानकर अन्य समस्त अधिकार अर्थहीन। तेणु सामाजिक अभिवृद्धि हासिल करबा पई सामाजिक न्यायर आवश्यकता रही एवं सामाजिक न्याय कि सामाजिक समानतार आवश्यकता रही। तेणु जितेबले आम भितर थिबा पार्थक्य, से धनी दरिद्रर पार्थक्य हो बा जातिगत पार्थक्य हो, जितेबले ताहा दूर हो पार सेतेबले आमे आर्थिक अभिवृद्धि सहित सामाजिक न्याय हासिल करि पारिबा। तेणु राष्ट्र एवं सरकारଙ୍କର दायित्व जातीय संबल को सुनियंत्रित करी समबंटन कले एवं प्रगति उन्नति जदि सबु स्तर लोक मान निकट में पहुँची पार, ताहले आमर सामाजिक न्याय संभव हो पार। तेणुक अर्थनैतिक अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय राष्ट्र निर्माण अन्य एक उपादान। देन नेशनल पॉलिटिकल कल्चर। ए हाई लेवल नेशनल कल्चर builds a strong and integrated nation. It binds the people of a nation into one thread and one nation. So, we should have a political culture. We have different cultures on the basis of our caste, on the basis of our religion, but despite of that we should develop a national culture, and by that national culture we can be united, and we can be united into one, and for making one nation one state it is very much essential that there should be a national culture. गोटे जातीय संस्कृतिर आवश्यकता रही। जेहेतु भारत हूँ गोटे विभिन्नतार देश, ये विभिन्न प्रकार विभिन्नता आम भीतर देखा मिले, संस्कृति भिन्न, जाति भिन्न, धर्म भिन्न। तेणुक यही विभिन्नता सत्वे आमको एकता बजाय रखा हेले आमको जातीय स्तर में गोटे जातीय सांस्कृतिक जीवन अतिवाहित करने पड़ो एवं से राष्ट्र अंगीकारबद्धतार आवश्यकता रही। देन इफेक्टिव स्टेट कंट्रोल्ड मेकानिज्म। A nation can be better constructed with better constructive mechanisms. There are various mechanisms are available. Our bureaucracy is a mechanism, police is a mechanism, military is a mechanism. So, all the mechanisms should be effective, they should function neutrally. Then the benefits of the law and benefits of the plan and projects made by the government can reach to the everybody. So, effective mechanism is very much essential. गोटे सुनियंत्रित शासन कलर आवश्यकता रही। तेणुक आमर सामरिक बाहिनी हूँ, आमर आरक्षी हूँ, आमर अमलतंत्र हो, से जदि निरपेक्ष भाव में कार्य संपादन करेंगे एवं से दायित्व को ठीक भाव में निर्वाह करेंगे, ताहले राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत होता समस्त प्रकार योजना समस्त निकट में पहुँची पार एवं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया त्वरान्वित हो पार। Then besides this type of the factors, elements which are contributing to build the nation, we are facing various challenges also, difficulties also in nation building, and we are going to discuss about the challenges in the nation building in India. One important characteristics of nation building is that everybody should rise above their narrow and selfish outlooks like caste, religion, linguistic and regional considerations. All should show respect and loyalty to the nation,
people are still being guided by the peripheral feelings, resulting severe challenges to nation building in India. We have discussed that we have various type of the differences on the basis of caste, religion, language and region. But the problem is that while we are not crossing this parochialism feelings, then that is causing a challenge to the national building. एटा प्राकृतिक मनुष भितर विभिन्नता रहिबो जाति को नेकी धर्म को नेकी किंतु से विभिन्नता को आमे अतिक्रम करी जदि आमे देशर स्वार्थ पई कार्य करि पारु नाहु एवं आमे से विभिन्नता भितरे ही बांधी के रहि जाउछु ताहाले ताहा देश प्रति आह्वान सृष्टि करूछि विपद सृष्टि करूछि। The most important challenges in the nation building in India are population explosion. Growth of population is the root cause of various socio-economic problems like poverty, illiteracy and economic backwardness. So, as populations are rising day by day, so that is creating various other problems like poverty, illiteracy and economic backwardness. So, जन विस्फोरण लोक संख्या विस्फोरण एटा होची प्रमुख आह्वान जाति गठन पाई कि कहीं लोक संख्यार अभिवृद्धि सहित आमर विभिन्न प्रकार समस्या आसी जाउची आमे जतिक प्रगति हासिल करबा कथा करि पारु नाहु दारिद्रता देखा जाउची निरक्षरता देखा जाउची अर्थनैतिक क्षेत्र रे आमे अनग्रसर हे जाउचु तनकरी ए जनसंख्या वृद्धि होची गोटे प्रमुख कारण भारत रे जोथि पाई कि आमर देश गठन बा राष्ट्र निर्माण पाई गोटे आह्वान सृष्टि होची। देन communalism. It is a doctrine of narrow outlook which aims at using religion for political, electoral, individual and selfish interest of their own community. So, communalism is related to community and community can be formed on the basis of caste, class, religion, language also. But in India generally by community we refer to religious community and the communalism is going to be created on the basis of the feelings of the religion. So, to love one's religion is not a bad thing, but while we are giving importance to our own religion, but at the same time creating hatredness and violence towards other religious community, then that is creating the feelings of the communalism and that is becoming the challenge of the nation building. सांप्रदायिक बाद संप्रदाय उपरे पर्यवेसित एवं गोटे संप्रदाय जाति को लेकिन सृष्टि हो पारिबो धर्म को लेकिन सृष्टि हो पारिबो एवं भाषा को लेकिन मध्य सृष्टि हो पारिबो किंतु भारत रे मुख्यतः आमे संप्रदाय कहले धर्म भित्तिक संप्रदाय को बुझिथा एवं गोटे धर्म को बा निजे निजर धर्म को भल पाइबा भूल कथा नुहे किंतु आमे जेतेबेले आम धर्म को भल पाइबा सहित अन्यान्य धर्म प्रति विद्वेष मनोभाव देखौछु बा विद्वेष भावना एवं व्यवहार प्रदर्शित कर दउछु ताहा आमर सांप्रदायिकता मनोभाव को प्रतिपोषण करुचे एवं से सांप्रदायिकता मनोभाव जातीय संहति प्रति बा जाति निर्माण प्रति एक आह्वान। देन कास्टिज्म द लॉयल्टी टुवर्ड्स वन कास्ट ओवर एंड एबव द नेशन as a whole prevent nation building. The caste that one belongs to serve as a strong determinant of his or her voting pattern. So, in India, the feeling of caste and the influence of caste is not only significant in the social life, but also in the political life. Even while we are going to exercise our vote, we are asking ourselves that the candidate which has been stand for the election or which is contesting election, he belongs to which caste? If he belongs to my caste, then I am inclining towards him, irrespective of all of his characters. So, that is the reflections of the feelings of the casteism and it is a challenge to the nation building. तेनको जातिवाद तेनको जाति आमर रही भारत में जाति प्रथा रही तेनको जाति प्रथा जिते बड़े आमर सामाजिक जीवन राजनैतिक जीवन में जो प्रभाव विस्तार करुच्ची ताहा आमर जातीय संहति बा राष्ट्र निर्माण पाई कि गोटे विपद सृष्टि करुच्ची तेणुक आमे जिते बड़े आमर राजनैतिक व्यवहार प्रदर्शन करुचु भोट दबा कि जाऊँ बा निर्वाचन में जिते टिकेट भी बांटुंट राजनैतिक दल विशेष माने सेमानक नेतृवृंद निर्धारण करती कौ निर्वाचन मंडली में कौ जातिर लोक अधिका अच्छा सो दैट
they can give ticket to that caste people. Then that becomes a very bad reflection of the casteism. So, at that time it is becoming a challenge to the nation building. Then next is regionalism. It means love for one's own region or territory, but when it spreads the fury of ill will, hatred and violence towards others who don't belong to their area, creates problem within a nation. So, regionalism is based upon the region or the territory, and while we are giving importance to the people of our own region and we are neglecting the people of other region, then that is the feelings of the regionalism. And if you will do that, then that will be a challenge to the nation building. आंचलिकतावाद गोटे निर्दिष्ट अंचल प्रति भल पाइबार मनोभाव साधारणतः एटा को आम कहूँ भूमिपुत्र नीति माने जी जो जन्म होती से जन्मस्थान प्रति गोटे अहेतुक भल पाइबा रहिबा एटा होची स्वाभाविक किंतु मु जदि गोटे मनकर गोटे विभाग मंत्री होची एवं मु केवल मोर निर्वाचन मंडली मो जन्मस्थान को अधिका गुरुत्व देवी एवं अन्य अंचल प्रति वैमात्रिक मनोभाव प्रदर्शन करी ताहले ता द्वारा आमर जातीय जोटा एकता अच्छी ता भितर गोटे प्रकार फाट सृष्टि हम एवं से आंचलिकतावाद भी राष्ट्र निर्माण में गोटे आह्वान बा गोटे विपद. देन लिंग्विज्म इन इम्प्लाइज लव फॉर one's own language when competition or unequal treatment of languages arise out of it become challenge to the nation building. So there has been different types of the linguistic group of people are staying in India, and most of our states has been reorganized on the basis of the language, and sometimes we feel that some state they give more importance to their own people and they are misbehaving the other groups of the people, then that is the reflection of the linguism and that is a challenge to the nation building. भाषावाद तेणु भाषा को लेकिन जितेबले आम हीनमान्यता प्रदर्शन करूँ अन्य भाषाभाषी लोक मान प्रति खराब व्यवहार करूँ ताहा होची भाषावाद. तेणुक जेहेतु आमर भारत में विभिन्न भाषाभाषी लोक मैंने बसवास करुँच एवं भाषा होची आमर भाव विनिमयर एक माध्यम तेणु समस्त भाषा प्रति समस्त समान सम्मान बोध रहिबा आवश्यक ताहले आमर कौन प्रकार समस्या सृष्टि हब नाही किंतु जेहेतु सेटा हेई पारु नाही आम भितरे किछि अहेतुक भल पाइबार होची एवं ता सहित घृणा भाव विद्वेष भाव रहउची सेटा आमर जाति निर्माण प्रति गोटे आह्वान भाव रे देखा दोछि. देन टेररिज्म इट इज द कल्ट ऑफ स्प्रेडिंग टेरर इन द ओपोनेंट्स माइंड बाय वे ऑफ यूजिंग एक्चुअल वायलेंस. द टेररिस्ट अटेम्प्ट टू क्रिएट पैनिक by act of force and violence to fulfill their demands. So presently terrorism is a problem of not only of India but also of the world, and generally the terrorism or the terrorists they try to create terror and violence and they try to fulfill their objective or the demands by using force or by using the violence, and by which there has been great losses are going to be found not only in India but also at the international level also. आतंकवाद होची गोटे प्रमुख समस्या जनकरी जेतेबेले आमर कोनोसी गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य अभिमुख्य को हासिल करबा पई कि गोटे गोष्ठी भयर वातावरण सृष्टि करे आतंक सृष्टि करे ताकू आतंकवाद बोली कहा जाए एवं वर्तमान ए आतंकवाद होची मुख्य समस्या आमर भारतर राष्ट्र निर्माण दिगरे. Then this map is reflecting the various dominant languages which is going to be spoken in India and on the basis of which a different state has also been reorganized. Then we will come to the constitutional provisions and nation building in India. So in order to make India a vibrant nation, our constitutional makers have also tried their best to make certain type of the provisions and steps for promotion of the national integration as well as also national unity in India, and we can discuss about those steps. The process of nation building in India started only after her independence. Being aware about the social diversity and cultural plurality, the constitutional frameworks have adopted following steps in the constitution to strengthen the process of nation building in India. भारत जेहेतु विभिन्नतार देश एवं विभिन्न सांस्कृतिक
भाषा सांस्कृतिकतार लोक मैंने बसवास करुँच तेणुक समस्त भितर गोटे एकता समन्वय आने कि आमर संविधान प्रणेता माने विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करगुड़िक हूँ फेडरल सेटअप टू रिटेन द प्लुरालिस्टिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन सोसाइटी. The Republic of India is federal in structure. That means we have two sets of government, one at the central level and the other at the state level. Besides, though there has been the local government provisions are there, but in the federal setup we are including union government and the provincial government. And the provincial government, they will maintain their diversity and the union government will maintain unity among the all the provinces. Then unity in diversity is the goal for which India is declared to be Union of State. Article 1 of the Indian Constitution states, India, that is Bharat, shall be a union of states. That means all the states will be united and they will form the India. And the main objective of that is to maintain unity in diversity. विभिन्नता भितर एकता रक्षा करने होची भारतीय संस्कृतिर मूल लक्ष्य एवं आभिमुख्य जोथिपाई कि आम संविधान धारा 1 कहूँ भारत होची राज्य मानकर सम्मेलन. A strong center is perceived with weak provinces to maintain unity. So, in case of India, union government is very powerful. Most of the important powers has been vested upon the center, so that state government cannot do most of the decisions without consulting with the union government. So, in order to maintain unity across India, center has been made strong. आमर एकता को बजाय रखापी केंद्र सरकार हाथ में समस्त प्रकार गुरुत्वपूर्ण क्षमता न्यस्त एवं आमर केंद्र सरकार को शक्तिशाली करा जायछि. सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल इलेक्शन कमिशन and integrated judiciary to combat the divisive forces. Though India has various type of the diversity, so divisive forces are also there. So, in order to divert the divisive forces, there is provision of single citizenship, single constitution and single election commission and one judicial system throughout India. At the apex, there is the Supreme Court, and at every state level, there is the High Court. That means, if any cases we are not satisfied with the verdict given by the High Court, then we can go to the Supreme Court, and the verdict of the Supreme Court is the final. That means, throughout India, we have a unified judicial structure, and in which state we may reside, our citizenship is one, that is the Indian. We are all are Indian, so single citizenship is there. We have only one constitution which is applicable throughout the India, and we have also a single election commission which is conducting elections throughout the territory of India. एकक नागरिकता, गोटे संविधान समग्र भारतवर्ष पाई एवं गोटे निर्वाचन आयोग जे समग्र भारतवर्ष पाई विभिन्न प्रकार निर्वाचन को संगठित कराउछि एवं ता सहित एकक न्यायपालिका व्यवस्था. यह भारतर एकता एवं समन्वय रखा पाई कि एही व्यवस्था करा जायछि. Then equality of law, status and opportunity to everybody to foster the feeling of brotherhood among the people. Equality of law is there, status and opportunity is there. This has been mentioned in our preamble of the constitution, that all the people of India should enjoy equality irrespective of their status, and opportunity will be provided to all equally, and there should be feeling of brotherhood. समस्तक भितर समानता रहिबो, समस्तकर स्थिति समान रहिबो एवं जहाँ सरकार सुविधा सुजोग प्रदान करिवे समस्त को समान भाव में उपलब्धि हेबो. ता सहित भारत में बसवास करुथिबा समस्त व्यक्तिविशेष मध्य भातृत्वर भाव बजाय रहिबो, जहाँ आमर संविधानर प्रस्तावना रे उल्लेख अछि. डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस. सेही संविधान प्रस्तावना रे एटा मध्य उल्लेख अछि जे भारतर एकता एवं संहति बजाय रहिबा सहित व्यक्तिर स्वतंत्रता मध्य रहिबो. देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिलेटिंग टू कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन वेयर फॉरबिडन. दैट मीन्स no discrimination is allowed on the basis of caste, color, creed, sex, place of birth or the religion, and that's why we have been granted fundamental right, that is the right to equality. Under right to equality, all are equal before the eyes of law and
it also provides under Article 15 there should be absence of discrimination. कौन सी प्रकार वैषम्यता रहिबो नाही काहा भितर जाति धर्म वर्ण लिंग भाषा को नहीं. And India has been declared herself to be a secular state. In order to maintain secularism, the citizens of India have been granted right to freedom of religion, and India is not a state which is giving importance to any particular religion. भारत हूँ गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र. एठी बसवास करथिबा समस्त नागरिकों को धार्मिक स्वाधीनता प्रदान करा जायछि. व्यक्ति माने एठी स्वतंत्र भाव में निज इच्छा अनुसार धर्म ग्रहण करि पारिबे. ता सहित आमर कोनसे राष्ट्रीय धर्म नाही. Then decentralization of power up to the grassroots level to secure a better standard of involvement of public in administration. So power is not concentrated in one hand. Here power has been decentralized. Some power has been vested with center, some has been with state, some has been with the local government. So power has been decentralized in order to make administration more efficient. प्रशासन को सुदृढ़ करबा पाई कि क्षमतार विकेंद्रीकरण करा जायछि. क्षमता गोटे जगार ठूल होइकि रही नाही. केंद्र सरकार को किछि क्षमता दिया जायछि, राज्य सरकार को दिया जायछि. ता सहित स्थानीय स्वयंशासन व्यवस्था मध्य भारत रे रहिछि. Then Constitution also safeguards to the minorities and weaker sections of the Indian society. In the Indian society, there have been minorities are there, weaker sections of the people are there, and in the Constitution, there has been also provisions like reservation to safeguard the interest of the minority and weaker sections of the society. तेनको समाज रे जो माने दुर्बल श्रेणी लोक माने अछंती बा जो माने संख्यालघु अछंती सेमानकर सुरक्षा पाई मध्य संवैधानिक व्यवस्था रहिछि. Then it has also adopted strategy for securing economic development and socio-economic justice for everybody. Economic development, how it will be secured, for that there has been various provisions are there, like directive principles of state policy is there, which is guaranteeing also socio-economic justice and economic development to the people. एवं लोक मानकु सामाजिक अर्थनैतिक न्याय केमती मिलिबो, अर्थनैतिक अभिवृद्धि केमती मिलिबो, सेथि पई कि मध्य संविधान रे व्यवस्था रहिछि. Though efforts have been made to strengthen the process of nation building on the one hand and successfully fight the divisional forces on the other, the process of nation building in India has remained a slow, complex and problematic process. We have adopted various provisions, constitutional provisions. We have made various national plans, projects for making nation as a vibrant one. But despite of that, our pace of growth is very slow. Then why this is happening? Because there has been certain causes which is making it failed one. तेणुकरी ये जो आमर जाति निर्माण बा राष्ट्र निर्माण कहीं असफल होउची, कहीं मंथर गति चली तार कारण गुड़िक कौन आसतु आलोचना करवा. द प्रोमिनेंट कजेस ऑफ द फेल्यूर ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया आर एज फॉलोज. प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग ऑल द गुड मेजर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, increase in political violence and political corruption, groupism and political defection, socio-economic imbalance. मुख्य कारण गुड़िक होउची आमर जो सब आईन तैयारी करा जाउची सरकार को द्वारा सेटा ठीक भाव रे कार्यकारी हेउ नाही एवं राजनैतिक हिंसा वृद्धि पाउची, दुर्नीति वृद्धि पाउची. ता सहित आम भितरे जो गोष्ठी सेटा पूरा आहुरी दिन को दिन से विभाजन गुड़िक प्रतिफलित होउची. राजनैतिक विभाजन देखा दोची. आमर वर्तमान माने शह शह संख्यार राजनैतिक दल सृष्टि हेलानी एवं ता सहित आमर जो सोशियो आ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोटा अच्छी सेटा इम्बालांस डेवलपमेंट होची. सबु अंचल रे समान भाव रे उन्नति हेउ नाही कि सबु स्तर लोक मान निकट रे समान भाव रे उन्नति पहुंची पारु नाही. ग्रोथ ऑफ फीलिंग्स ऑफ फैक्शनलिज्म एंड रीजनलिज्म, vote bank politics and appeasement policy. The benefits have failed to reach at all the sections of the society. Red tapeism and misuse of power in politics, external interferences. आमर आंचलिकतावाद वृद्धि पाउची. राजनैतिक दल माने बेसी लोक मान को खुशी करके केमती तांकर भोट बैंक तैयारी करेंगे ता उपरे गुरुत्व दौरान. तेणुक दीर्घश्रुति कार्यक्रम अपेक्षा से माने सामयिक भाव में लोक मान केमती खुशी प्रदान करेंगे और तांकर केमती भोट संग्रह करेंगे ता उपरे अधिक गुरुत्व दौरान. ता सहित आमर जोटा बेनिफिट जोटा
समस्त को सबु श्रेणी लोकों पाखरे पहुँची पारुना एवं बहुत गुड़े कार्यक्रम योजना अच्छी जोटा नाली फिता तले बंद होकर रही जाउची एवं आमर क्षमता जो मान हाथ न्यस्त रोची से माने अधिकांश समय क्षमतार दुरुपयोग करुचंती एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कारण आमर राष्ट्र गठन विफल हबारे होची आमर बाह्य देशर मध्य हस्तक्षेप आम देश भितर रोचे विभिन्न प्रकार सन्त्रासवाद कार्यक्रम माध्यम हो किंबा अशांति सृष्टि करिकि हो किंबा हिंसा सृष्टि करिकि हो बाह्य राष्ट्र माने मध्य आम राष्ट्र रे हस्तक्षेप करुछंती एंड other causes are decline of institutions, influence of bureaucracy and lack of work culture. आमर जो विभिन्न प्रकार अनुष्ठान अच्छी कार्यपालिका अमलातंत्र व्यवस्थापिका एमानकर कार्य कलिबार शैली आस्ते आस्ते क्षय होइका जाउछि एवं अमलातंत्र प्रभाव आस्ते आस्ते विस्तारित होउछि ता सहित आमर जो कार्य संस्कृति रहिबा दरकार लोक माने कर्मठ हबा आवश्यक लोक मानकर कार्य प्रति स्पृहा आवश्यक सेटा मध्य कमी कमी जाउछि. So, in spite of these failures, India is yet to undertake the challenging task of connecting Indians into a fully united, vigorous, dynamic and established nation. आ सत्य भी भारत तार प्रयास जारी रखी भारत को गोटे समृद्ध भारत में परिणत करने. नेशन बिल्डिंग इज प्राइमरीली ए पॉजिटिव फोर्स. इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग यूनिटी एंड सॉलिडारिटी इन द कंट्री. इट एक्सपीडाइट्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Nation building is a positive force. It always works for a positive goal, positive objective, and it always tries to achieve unity and solidarity in the country, and it tries to make the process of economic development in a speedy way. Nation building includes state building, people building, democracy building, citizen building, economy building, social building, and government building. Means if you build all these things, then nation building can be possible. Nation building helps people to become a well organized, united and cohesive group. आमर जाति निर्माण गोटे सकारात्मक दिगरे सब बेले काम करुछि एवं एहा देश रे एकता और संहति बजाय रखा कर प्रचेष्टा करुछि. अर्थनैतिक अभिवृद्धि को केमते द्रुत गति हासिल करा जाय पारिबो सेथि पय कि लक्ष्य आभिमुख्य रखुछि. ता सहित राष्ट्र निर्माण कहिले केवल राष्ट्र निर्माण को लेकर करा जाउनी. राष्ट्र निर्माण कहले बहुत गोटे जिनसर निर्माणर समष्टि रे राष्ट्र निर्माण संगठित होछि. जेमती माने लोक निर्माण माने कोन लोक मान को सुसंगठित करबा एवं गणतंत्र निर्माण गणतंत्र को सुफल भाव में कार्यकारी करबा. नागरिक निर्माण नागरिक मान को सचेतन करबा समानकर अधिकार एवं कर्तव्य संबंध में. अर्थनैतिक निर्माण अर्थनीति को सुदृढ़ करबा. सामाजिक निर्माण एवं सरकार किपरि लोक माने केमती भय शून्य भयहीन भाव में कौन प्रकार चापर बशवर्ती न होइके से भोट देवे गोटे सुस्थ सरकार गठन करेंगे एवं समाज को मध्य केवल सुस्थ भाव में निर्माण करेंगे. ए सबु जिनसर समाहार रे राष्ट्र निर्माण संगठित एवं गोटे देश निर्माण करने को हेले आमर जो देश भितर जो सब गोष्ठी अच्छा विभिन्न गोष्ठी से राजनैतिक गोष्ठी हूँ माने राजनैतिक दल हूँ बा विभिन्न प्रकार धार्मिक गोष्ठी हूँ विभिन्न जातिर गोष्ठी हूँ समस्त भितर गोटे समभावापन्न रहिबा दरकार समन्वय रहिबा दरकार एवं से माने सुसंगठित हेबा आवश्यक से माने एकत्र सूत्र रे बांधी हबार आवश्यकता रही. द नेशन बिल्डिंग मेक्स द पॉलिटिकल सिस्टम ऑटोनोमस legitimate and capable of both meeting the demands and aspirations of the people. It helps people making a democratic and developed society overcoming threats, crises and all other challenges. तेणुकरी जाति निर्माण गोटे देश को गणतांत्रिक एवं अभिवृद्धि संपन्न समाज रे परिणत करने सहित समस्त प्रकार चाप समस्त प्रकार आह्वान को अतिक्रम करी देश किपरि स्वावलंबनशील हब एवं लोकमानकर दाबी एवं लोकमानकर आशा को किपरि पूरण करिवो से दिगरे कार्य संपन्न करबा आवश्यक. एट द सेम टाइम प्रॉपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन among union and state government is essential in the process of nation building. While making the process of nation building, it is desirable on the part of government to establish harmony between nationalism and internationalism to maintain international peace. बेले बेले एमिति हुए आम राष्ट्र निर्माण क्षेत्र में अधिका कार्य करने द्वारा आम आंतर्जातीय शांतिर
व्यवस्था प्रति आमे टिके गुरुत्व दिउनु एवं जहा द्वारा बेले बेले सेटा अंतर्जातीय शांति रक्षा रे मध्य बाधा सृष्टि हुए तेणुक आम भितर जो अत्यधिक जातीयतावाद सृष्टि हुए ताहा अंतर्जातिक शांति पाई कि मध्य विपद सृष्टि करथाय तेणुक राष्ट्र निर्माण करने समय आमे मध्य एटा लक्ष्य रखिबा आमर जातीयतावाद चिंताधारा सहित अंतर्जातीय बाद चिंता को मध्य केमती समन्वय करबा एवं अंतर्जातीय स्तर रे आमर शांति स्थापन करबा पाई मध्य गोटे राष्ट्र गोटे देशर लोक माने बा बासिंदा माने मध्य कार्य समापन करिवे ता सहित राष्ट्र निर्माण भी हबो एवं आमर अंतर्जातिक स्तर रे शांति स्थापन मध्य हेई पारिबो एवं विश्व एक शांति एवं सहावस्थानर स्थान हेई पारिबो मनुष्यर समाज पाई। थैंक यू धन्यवाद।